momentous occasion of the inauguration of the University of Mumbai's Center of Excellence in Maritime Studies. Through this unique center, the university is embarking towards bolstering higher education and research in the area of maritime studies. We have with us the august presence of Honorable Shri Bhagat Singh Koshyari ji, Governor of Maharashtra and Chancellor of the State Universities as the chief guest. Namaskar, sir. We are privileged to have with us Admiral Karambir Singh, Chief of Navy, and Dr. Shekhar Mande, Director General, Council of Scientific and Industrial Research, CSIR, as the guest of honor. I request Professor Ravindra Kulkarni, Pro Vice Chancellor, to give the welcome speech. Thank you, Dr. Anuradha ji. Chief guest of today's inaugural function, Honorable Chancellor Sir, University of Mumbai, and Honorable Governor Maharashtra State. Guest of honor, Honorable Admiral Karambir Singh, Chief of Navy Staff, Indian Navy. Honorable Dr. Shekhar Mande, Director General CSIR. Honorable Vice Chancellor, Professor Suhas Pednekar, Deans, Registrar, and all my dear colleagues. Let me welcome Honorable Chancellor Sir, Honorable Admiral and Director General CSIR for this inaugural function for Center of Excellence in Maritime Studies. The idea of setting up the Center of Excellence in Maritime Studies is very timely and essential, and a timely step taken by University of Mumbai. It is, we say it is essential primarily because at the moment, there is no such facility and hence no opportunity for students aspiring to take up courses cutting across maritime subjects in the areas of humanities, commerce, and science and technology. So it requires a really multidisciplinary approach in designing the course, and that is what is being taken up in conceiving the idea of Center of Excellence in Maritime Studies. The idea is considered to be timely as well because there is an increasing trend in the conflicts in the maritime sector, be it in the form of breach in the maritime jurisdiction of a littoral state or in the exclusive economic zone or legal continental shelf of the nation, transboundary issues related to navigation, trade, and fisheries itself. So in a way, it is essential as well as timely step taken by University of Mumbai. In addition, like the idea in conceiving the Center of Excellence in Maritime Studies was to provide adequate human resource with cross-disciplinary expertise or skill that could be utilized to create human resource with multidisciplinary and cross-disciplinary capabilities, which is essential to tackle future challenges and opportunities in the maritime sector. Having a long coastline connected with University of Mumbai was definitely one of the major inspiring reasons. But besides that, there were multiple reasons in setting up a Center of Excellence in Maritime Studies. For example, like the important considerations such as India's long maritime history and trade, the ever-increasing dependence of mankind towards ocean for food, energy, trade, medicine, mineral resources, and recreation apart from the national security. Once we depend more and more towards sea or ocean for our survival and prosperity, there are going to be the overlapping and clashing interest among the communities or nation. And this would need in-depth understanding of our seas and ocean in a scientific way. Research needs to be promoted in a definite directions. We require definitely an appropriate technology, engineering designs to harness the resources. We need a proper legal framework to deal with overlapping interest and conflicts. And at the same time, we need definite supporting studies for trade, commerce, and definitely to meet the national security concerns connected to the oceans. Pursuing this particular goal, Center of Excellence in Maritime Studies will have strong link with all research institutions connected with these studies, be it National Institute of Oceanography,
or probably premier institutes different premier institutes connected to ocean research, maybe say Naval War College, and likewise so many organizations which are deeply involved in research connected to maritime studies nationally and globally as well. In addition, the Center of Excellence in Maritime Studies will include the definite studies on underwater domain awareness framework as well as deep ocean as major focus areas of research. The UDA framework, the underwater domain awareness framework, will include all the maritime stakeholders, including the defense, blue economy, environment and disaster management, and the science and technology providers. The Sagar vision given by Honorable Prime Minister is going to be definitely better served through Center of Excellence in Maritime Studies. We would like to keep a broad involvement of all stakeholders by giving importance to the Sagar vision and implementing it in an academic way through the Center of Excellence in Maritime Studies. We would like to acquire global sector. So I extend warm welcome to all dignitaries and appreciate sincere thanks for accepting our invitation for this inaugural function. Thank you. Thank you, Professor Kulkarni. Now I request Professor Suhas Pednekar, our Vice Chancellor, to deliver his introductory speech. Very good afternoon. Namaskar, Pranam. It is my extreme privilege and honor to welcome Honorable Governor of Maharashtra and Chancellor of all the state universities of Maharashtra, Adarniya Shri Koshyari ji, Admiral Karamveer Singh ji, Dr. Shekhar Mande ji, Director General CSIR, all my colleagues, Dr. Kulkarni, Pro Vice Chancellor, Baliram Gaikwad, Registrar, Dr. Anuradha Majumdar, the Dean, Science and Technology, and also the Director of this newly formed center, all the other officers of University of Mumbai, all the members of the Senate, Management Council, Academic Council, dear principal, teachers, and students. 164 years of the existence of University of Mumbai is going to witness one more feather in its crown by adding one center. So today is a historic day, I would say. University of Mumbai, as you all know, one of the largest in the country, with nearly 56 departments, several campuses we have, 2 model colleges, various institutions, and nearly 825 plus colleges affiliated to University of Mumbai, and total strength of students exceeding 8.5 lakh. And the geographical expanse is right from Gujarat border up to Goa border, I would say, the entire coastal line, which is nearly 720 kilometers. So we are blessed with that coastal line under our jurisdiction. And this is the first time we are going to introduce and going to set up one of its kind Center of Excellence in Maritime Studies. Through this unique center, the university is embarking towards bolstering higher education and research in maritime studies. The center is expected to have an interdisciplinary focus, taking cognizance of the borderless realms of marine and maritime studies. CMAS, as is the short form of our Maritime Studies Center, will be offering PG diploma, master's and PhD programs in maritime studies with innovative approaches to curriculum development and delivery. The center is expected to attract both Indian and foreign students in this domain. CMAS will aspire to excel in maritime commerce, maritime law, maritime science and technology, maritime heritage and history. It will focus on maritime security, sustainable ocean resource utilization, maritime conflicts,
strategies and resolution, blue economy, natural hazards and disaster, livelihood based on ocean and coastal areas, coastal habitats, island communities, and regional maritime and coastal issues. CMAS will have strong link with research institutions like NIO Goa, the premier institute of the country in ocean research. Further, collaborations with the Indian National Center for Ocean Information Service, Ministry of External Affairs, Government of India, Maritime University in Dhaka, School of Marine Science, Goa University, and many more. The center envisages collaborating with other premium national and international organizations and institutes in the domain of marine and maritime. For example, Indian Maritime University, Mumbai Port Campus, etc. The center will function with cooperation from Naval War College, Goa, an affiliated higher education institution with the University of Mumbai. This will assist in synergizing and convergence to interdisciplinary and integrated higher education and research in maritime studies. CMAS will provide a stimulating intellectual climate for academics and policymakers working on topics related to coast and seas. It will be of encompassing with radius covering broad spectrum of courses and focus on covering social science, sciences, law, and commerce. We all know our Honorable Prime Minister is propagating strengthening our nation by strengthening the 5 pillars. And the overall education's purpose is, apart from self-growth, is to contribute in the nation building. आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो पहले हम सब आत्मनिर्भर बनना चाहिए. आत्मविश्वास, आत्मचिंतन और आत्मसम्मान. With this, once again, I welcome you all today to inaugurate one of its kind, the Center for the Maritime Studies. Thank you so much. Thank you, sir. It's indeed your vision for CMAS, which has been instrumental in the translation of the concept of the center to today's inauguration. Council of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology, Government of India, has state-of-the-art CSIR laboratory facilities pan-India, including the renowned CSIR National Institute of Oceanography, Goa. Its mission includes adopting a multi-pronged approach for development of human resources, promoting research and development and innovation. We are fortunate to have with us Dr. Shekhar Mande, Director General CSIR and Secretary DSIR, with us as the guest of honor, requesting Dr. Mande to deliver his speech. Thank you very much. Honorable Governor of Maharashtra, Shri Koshari ji, Chief of Naval Staff, Admiral Karambir Singh ji, Vice Chancellor, University of Mumbai, Professor Suhas Pednekar ji, all the distinguished guests assembled here. जैसे कि प्रोफेसर पेडनेकर ने बताया कि आज यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एक बहुत ऐतिहासिक कदम ले रहा है और मैं पूरी तरह प्रोफेसर पेडनेकर के साथ सहमत हूं कि आज सही में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम लिया जा रहा है. हाल ही में माननीय वित्त मंत्री ने जो संसद में बजट प्रेजेंट किया था उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि डीप ओशन मिशन का भी एक जिक्र किया गया था और माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि डीप ओशन मिशन के लिए सरकार करीबन 4000 करोड़ रुपए का प्रदान करेगी और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है इसलिए कि पूरे विश्व में ओशन और ओशन की जुड़ी हुई इकोनॉमी जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और जो कि भारत की हमारी जो कोस्टल लाइन है वो करीबन 7500 किलोमीटर की है. हम समझते हैं कि भारत को इस इकोनॉमी में
एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करना होगा आने वाले समय में। और इस रोल को अदा करने के लिए हमें नेक्स्ट जनरेशन लोगों की तैयारी करनी होगी। हमें नए नए विद्यार्थियों को ओशन के बारे में पढ़ाना होगा। और इसी वजह यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने जो आज एक कदम उठाया है, एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत ऐतिहासिक कदम जो है। आप सभी को पूरे CSIR की ओर से हार्दिक अभिनंदन इस बारे में। जैसे कि प्रोफेसर अनुराधा ने बताया कि हमारी जो एक प्रयोगशाला है गोवा में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, और हमें काफी खुशी होगी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के साथ जुड़ने की। और हमारी जो प्रयोगशाला में जो काम होता है उसके तरफ से अगर कुछ भी हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के साथ कोलैबोरेट करके ये मैन पावर जनरेशन में अगर कुछ हमारी ओर से अगर भाग ले पाए तो हम सभी के लिए एक बहुत खुशी होगी। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इस कदम पे। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू शेखर मांडे जी। बहुत सुंदर शब्दों में आपने इस क्षेत्र का जो इम्पोर्टेंस है उसको दर्शाया है। And that is the mission of our CMAS as well. We would like to get into research as well as academic delivery in higher education and create efficient manpower to meet this sector, which will be very much myriad, including maritime commerce, trade, navy, blue economy, climate change, and the plethora. Your speech was very insightful and visionary, and we look forward to collaborations with CSIR laboratories and other institutions for advancement of research, value-added courses and workshops to be offered by the center. Indian Navy encapsulates the multidisciplinary nature of the maritime world. Apart from hardcore war fighting, which itself is multidimensional, the Indian Navy has developed excellence in range of disciplines, from hydrography to diplomacy to disaster relief. We are privileged to have with us Admiral Karambir Singh, PVSM, AVSM, ADC, Chief of the Naval Staff, Indian Navy. Sir, requesting you to deliver your speech. Thank you. His Excellency Shri Koshyari, Honorable Governor of Maharashtra, Vice Admiral Anil Chawla, Flag Officer Commanding in Chief, Southern Naval Command, Dr. Shekhar Mande, DG CSIR, Professor Suhas Pednekar, Vice Chancellor, University of Mumbai, ladies and gentlemen, good afternoon. It's a proud privilege for me to be present and the Indian Navy to be associated with the setting up of the University of Mumbai's Center for Excellence in Maritime Studies, CMAS. This association between the University of Mumbai and the Indian Navy through the Naval War College is very timely, as India's turn to the seas for greater prosperity and security becomes inescapable. History chronicles the fact that nearly every developed power had a distinct maritime focus and orientation. Not only have the seas been critical to security, as India's own experience with colonialism shows, but also to prosperity, as the experience of nations with vibrant global economies, such as Britain, Netherlands, Portugal, and more recently, US, France, Japan, and Singapore show. So as the only nation with an ocean named after it, sea blindness can no longer be an affliction for India. At a time when India looks to assure the prosperity of its citizens, who amount to nearly 1/5 of humanity, and develop a $5 trillion economy, a turn to the seas to expand India's horizon outwards is inevitable. And such close linkages between the seas and the national prosperity and security is not surprising. You all may know the 70, 80, 90, 100 rule, which emphasizes the relevance of the oceans to humanity. 70% of the globe is covered by the seas. 80% of global population resides within 200 kilometers of the coast. 90% of the global maritime traffic by volume passes over the seas. And nearly 100%, 99% of global information traffic flows through undersea cables.
So it is in this light that the Center for Excellence in Maritime Studies will have an important role to play, not only in furthering the maritime studies among students and scholars, but also fostering greater maritime consciousness amongst the society at large. And given the strong academic pedigree of the University of Mumbai, the Indian Navy is truly excited to be associated with the initiative and is optimistic about the intellectual enhancement that the center and the university would bring to the overall national maritime discourse. When we speak from a policy perspective, the Government of India in recent years has placed considerable impetus to fully harnessing India's and the region's growth potential through the oceans. Starting, of course, with the Honorable Prime Minister's rallying call of Sagar, of security and growth for all in the region. Initiatives such as the port-led development through Sagarmala project, Niti Aayog's 4 pillars of Sagarmala, Sagar Suraksha, Sagar Sadhan, Sagar Sambandh, impetus to blue economy and marine spatial planning, etc. These have all invigorated discussions and redoubled efforts towards tapping India's maritime potential. So it is therefore truly an exciting time to be a scholar on affairs maritime. At the same time, the maritime domain is facing increasing challenges that could impact India's turn to the seas. The ongoing great power competition, increasing transnational crime at and from the sea, overexploitation of maritime resources, regional flashpoints with spillovers at sea, like you see in Yemen, etc., they complicate India's exploitation of the seas for national benefit. These developments also need to be contextualized to the emergence of the Indo-Pacific as a center of gravity of global geopolitics. And given Indo-Pacific's largely maritime orientation, India would need to deftly negotiate the Indo-Pacific's varied cooperative and competitive connotations to assure its prosperity. I am confident that CMAS would address these increasingly complex issues in maritime affairs through a multidisciplinary, research-aided, and outcome-oriented methodology. The center's research efforts would certainly contribute to India's growth journey at a time of increasing seaward focus. Let me take this opportunity to wish the center the very best and assure the University of Mumbai of all support, every support from the Navy in nurturing this fledgling organization. Thank you. Jai Hind. Sean Overna. Thank you, sir. It was a treat to hear you speak. And indeed, University of Mumbai has had a close collaboration with the Navy and naval entities, including the Naval War College, Goa. And it has been a very fruitful association, and we are going to take it ahead. Your speech was invigorating as well as stimulating, and as I said, a treat to hear. The world of sciences, social sciences, and commerce converge in the Navy's world. We at CMAS are also planning to recreate the same spirit and multidisciplinary approach in our academic delivery and dissemination of knowledge. With this, we come to a major part of our today's event. I request Honorable Governor Shri Bhagat Singh Koshyari ji to please digitally inaugurate the Center of Excellence in Maritime Studies by unveiling the plaque, the digital plaque. So please press the button so you can have that event. I request Koshyari ji. Yes. Okay, Dhanyavad Koshyari ji. I request you to kindly
give us your address, deliver your address. Oh. Center of Excellence in Maritime Studies, सीमास के आज इस यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की शुभारंभ के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्रीमान सुभाष पेटेकर जी, अपने CSIR के डीजी डॉक्टर शेखर मेंढे जी, और हम सब के सौभाग्य से इस कार्यक्रम में उपस्थित एडमिरल करमबीर सिंह जी, कुलकर्णी साहब, और पर्टिकुलरली डॉक्टर अनुराधा जी और सभी श्रोतागण. I don't think I need anything more to speak because Admiral Karambir Singh was when speaking. I thought that he is more than an admiral, a very academic person. And just in the opening this ceremony, I can first of all wish that even after his retirement, Admiral Karambir Singh ji, I request him to associate with these seamen so that the institution, the university, can get the advantage of his experience and his vast studies and his practical studies. मुझे बहुत प्रसन्नता होती है मुझे जब वाइस चांसलर साहब ने कहा कि हम इस प्रकार का काम शुरू करना चाहते हैं, तो मेहदी साहब हमने कहा कि हिंदी में बोलते हैं नेकी और पूछ पूछ, एक अच्छा काम हो और वो भी इसके लिए क्या पूछना है, जितना जल्दी हो सके करें. और फ्रॉम माय ओन साइड मैंने गोवा के यूनिवर्सिटी से और वहाँ के इंस्टीट्यूट से भी ये प्रार्थना की और आग्रह किया कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट दोनों ही कोलैबोरेशन में जो आज की नीड है, द नीड ऑफ टुडे एंड द नीड ऑफ इवन टुमारो, कि वी हैव टू डू अ लॉट इन दिस सी अफेयर्स, दिस मैरीटाइम स्टडीज, बहुत चीजें हैं. बहुत अच्छा लगा कि सब सहयोग में लिया. एंड आई थैंक मिस्टर शेखर मेंढे ऑल्सो who give his acceptance. और ये एक अच्छा काम आज शुरू हो रहा है और सबको बधाई देते हुए मैं विशेष करके अभी अनुराधा जी को सुन रहा था और जिस ढंग से वो संचालन करती और ऐसा लग रहा था कि she has adopted the institution as if the institution is her own issue, her own daughter, her own son. और उसके बोलने से और आप लोगों के संचालन से तो मैं अनुराधा को भी बधाई देता हूँ, कांग्रेचुलेट करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ. समुद्र के देवता जी है, अगस्त है, कुंभ, कौन कौन है, उन सब से भी प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको ये शक्ति दे कि ये जो सीमेस है, इन इट्स रियल सेंस इट मे बिकम ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जिसको आप चाहते हैं उस प्रकार का बने. मैं ये शुभकामना देता हूँ. ये आज के युग में पहले हमारे यहाँ डीजी साहब और एडमिरल साहब, आप जानते हैं कि हम सब भारतीय लोग हैं और यहाँ ये धरातल के ऊपर आसमान, आसमान के ऊपर अंतरिक्ष, उसके ऊपर देवत्व और इसी प्रकार के धरती के नीचे भी जाने कितने पाताल हैं, इसका अनेक प्रकार का वर्णन आता है. अब वो कोई केवल कल्पनाएं थी, यूटोपिया था सबका, ऐसा नहीं.
तो कहीं न कहीं लोगों ने स्टडी क्या होगा, कहीं न कहीं लोगों ने अपने ध्यान से, मनन से, चिंतन से और सोचा होगा क्या ये भी है, ये भी है, ये भी है, और आज वो सब चीजें सही हो रही हैं। हम लोग जब पढ़ते थे कि नहीं वहां से युद्ध हो रहा है और धृतराष्ट्र को दिखता भी नहीं है, तो वो कहता है संजय से कि भाई बता यार क्या क्या हो रहा है। तो आज के इस टीवी की तरह से वो सब सामने वर्णन करता, सारी चीजें बताता। अभी क्योंकि कालखंड में खत्म हो गई होंगी, समाप्त हो गई होंगी, और ये भी हो सकता है जैसे बहुत लोग कहते हैं नहीं कोरी कल्पना है, तो कोरी कल्पना होती तो आज साकार कैसे होती है, हाउ कुड इट हैज बीन रियलाइज्ड। तो इसलिए ये प्रक्रिया ये लगातार जारी रहने वाली चीज है। और जो विश्वविद्यालय है, विद्यापीठ है, इन विद्यापीठों में, इन विश्वविद्यालयों में एकदम नित्य नई चीजें आना ये बहुत आवश्यक है। और क्योंकि अभी आपने बताया कि 720 किलोमीटर का अपना कोस्टल एरिया है महाराष्ट्र का, और इंडिया का मोर देन 7000 किलोमीटर है, आपको बता रहे थे। अब इस सब में इतना अभी स्टडी करने के लिए है, अब उस सबको स्टडी करना है तो एक सिस्टमैटिक स्टडी हो, कोई अलग अलग करे डिफरेंट, उसमें एक इंटीग्रेटेड रूप से उसकी स्टडी हो। तो मुझे लगता है कि उसके कारण से जो रिजल्ट होंगे वो रिजल्ट अच्छे होंगे। और उस दिशा में ये जो आपका सीएमएस है एक महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। और आज तो मैं सोचता हूँ कि मेरा विचार है कि समुद्र केवल स्ट्रेटेजिकली ही आवश्यक नहीं है, इट्स नॉट ओनली फॉर द नेवी पर्सन एंड कोस्टल गार्ड, ये शायद सामान्य नागरिक के लिए और उसके अलावा हमारे विश्वविद्यालय, हमारे छात्र, हमारे युवा, द यूथ, ये उसके लिए भी आवश्यक है कि वो इस चीज की गहराई को सोचे। अभी पैसिफिक की बात कर रहे थे एडमिरल करमबीर सिंह जी। अब जब तक हम सोचा उससे पहले वहां कोई अपना काम कर लेता है, तो हम ऐसी स्टडी के माध्यम से, स्टडी सेंटर के माध्यम से हम क्यों नहीं आगे सोचे। आखिर इतना देश को आजाद हुई 70 साल से ज्यादा हो गए, आखिर किसने क्यों नहीं सागर मिशन शुरू किया गया, क्यों नहीं सागरमाला शुरू की गई, क्यों इतने वर्षों बाद इसका काम शुरू हुआ। पर क्योंकि कभी तो हुआ, बेटर लेट देन नेवर कहते हैं। अब एक प्रकार का ये नया चिंतन सागर के बारे में, वसंत के बारे में शुरू हो रहा है, तो हम उस दिशा में एक कंसंट्रेटेड, इंटीग्रेटेड इस प्रकार का अगर प्रयास करेंगे तो हमारा जो मैरीटाइम हेरिटेज कोई कम नहीं है। मैं अभी जब आपके यहाँ पर मंच पर आया तो मुझे ध्यान आया कि वो सत्यनारायण की कथा में तो पूरा ही आता है कि लीलावती, कलावती की कथा आती है, और किस प्रकार से झूठ बोला व्यापार करने का, तो क्या तो कॉमर्स के लिए जाती, सेना के लिए हो गया, सुरक्षा के लिए हो गया। कैसे झूठ बोला तो उनके नदी नाव ही डूबने लगी, फला होने लगा, तब फिर कैसे वो बचाए गए। फिर मुझे एकदम अभी बैठा तो मुझे ध्यान आया, अरे इस सागर के माध्यम से विजयनगर और ये सारे जितने हमारे डायनेस्टीज हैं, ये तो कंबोडिया, बाली, इंडोनेशिया कहाँ तक पहुंच गए थे। अगर ये सब नहीं होता तो कहाँ से पहुंचते इतने पहले वहां, आज से 500 शताब्दी पहले, 400 शताब्दी पहले। तो इसका अर्थ है कि हम लोगों के पास भी वो ज्ञान था। तो आज जब हमको लेटेस्ट नई से नया ज्ञान लेना है तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारे भारत भूमि के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे यहाँ जो ज्ञान है, ये ज्ञान था, तो उसको हम कैसे पुनर्जीवित करें। ये अनेक चीज का इंटीग्रेटेड था ना, इसलिए कॉम्प्रहेंसिव इस प्रकार की एक सोच लेकर के स्टडी चलेंगे तो इट विल नॉट बी मेयरली सागर मिशन, ये तो एक प्रकार का नेशन बिल्डिंग मिशन हो जाएगा। तो उसमें फिर सर्वांग इस प्रकार का होलिस्टिक ऐसी
हमारे सामने अप्रोच आएगी। और एक जितना इसका महत्व है, काफी कुछ कुलकर्णी जी से लेकर के हमारे एडमिरल साहब ने सभी चीजें बोली हैं, पर सारी चीजें हम लोगों को अभी बहुत अधिक चीजें इसमें डेवलप करनी है। और उस डेवलप करने के साथ साथ मेन चीज क्या है कि अभी हम डेवलप कर रहे हैं मुंबई के अंदर, और JNPT या कोई और किसी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो फिशरमैन है उनका बड़ा आंदोलन चल रहा है कि साहब हम खत्म हो जाएंगे, तो वो भी कैसे सोचना। इसके साथ आपका जो गवर्नमेंट है, जो सरकार में लोग बैठे हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, उनके साथ इन चीजों को कि उनका कैसे रास्ता बताना, अनेक चीजें हो सकते हैं। मतलब जो आप सोचते जाएंगे त्यों उसके बारे में सारी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं। यानी मुझे लगता है कि वहाँ तो कितनी चीजें हो सकती हैं, बायोडायवर्सिटी है, कितनी चीजें हैं। मैं जब मुझे लोग दिखाते हैं समुद्र में नीचे ले जा करके साथ देखिए ये फला देखिए, तो लगता है कि बहुत ही इसके नीचे तो जाने क्या क्या चीजें हैं जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहा था रत्न गरबा, तो पता नहीं समुद्र के नीचे भी क्या क्या रत्न है। देख करके छोटी छोटी चीजें देखने से लगता है। तो जब आप लोग इतने डीप सी में जाएंगे तो वहाँ केवल आज के जमाने में तो समुद्र का महत्व ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल के लिए भी इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो ये बहुत अधिक स्कोप है, वास्ट स्कोप। यानी जितना वास्ट समुद्र है, हमारा सी कोस्टल एरिया है या सी है, उससे भी वास्ट इसके स्टडी का एक प्रकार से अवसर है, चांसेस है, अपॉर्चुनिटीज है। तो उस दृष्टि से आप और अच्छे से अच्छे विश्व भर के लोगों को बुला करके विश्व भर से अपना किस प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यानी आज तो समुद्र में कब साइक्लोन आएगा, क्या आएगा, अब यानी ये आपको दूसरे जो मेट्रोलॉजिकल है या कितने डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन सबसे भी कैसे संपर्क करके, तो इसलिए जो ज्ञान आप बनाए, जो कोर्स आप बनाए, जो स्टडी के लिए आप इस प्रकार के बच्चों के लिए बनाएंगे, तो वो ऐसा कॉम्प्रेहेंसिव हो कि उसमें जो इसका मल्टीपल उसके एरियाज है, उनमें हम कैसे स्टडी कर सके, उस दृष्टि से। और आप यदि इसमें अपना काम करेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अगले 8-10 वर्षों में शायद मुंबई यूनिवर्सिटी जब अपना, अभी तो 164 साल है, तो थोड़ी साल और 8-10 मैंने इसीलिए कहा कि जब 175वां साल मनाएगी, पता नहीं इसको क्या करते हैं, डायमंड, गोल्डन, सिल्वर, क्या जुबली कहेंगे, उसके कोई नाम भी नहीं ढूंढना पड़ेगा है। तो तब तक मुझे लगता है कि अनुराधा और उनके सभी साथी आगे में इंस्टीट्यूशन को एक नॉट ओनली सेंटर ऑफ एमिनेंस बल्कि एक ग्लोबल बना करके एक दुनिया में एक अच्छा श्रेष्ठ इस प्रकार का इसको इंस्टीट्यूशन बना करके और इसको और आगे हम सफल होंगे। मैं आप सबको बहुत शुभकामना देता हूं। निश्चित रूप से आपका काम सफल हो, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद Honorable Koshari ji. We always look forward to hearing you because of your deep understanding of Indian history, mythology. क्यों बोल गया? आप म्यूट हो गए अनुराधा जी, आप म्यूट हो गए। Sorry, I will speak again. Thank you, Honorable Koshari ji. We always look forward to hearing you with your deep understanding of Indian history, mythology, our culture, and the way you link it to the relevance of modern science and technology, contemporary issues like you raised about fisher folks, and India's development and growth plan is always very interesting to hear because you give a new perspective, a new dimension to our thoughts. Dhanyavad, sir. Now it's a privilege for me to deliver the vote of thanks. I have a couple of people to thank who have really contributed till now and will again future contribute till we sail ahead with CMAS. So we would like to thank, on behalf of University of Mumbai, we would like to thank Governor Honorable Bhagat Singh Koshyari ji for inaugurating the Center of Excellence in Maritime Studies and enlightening us with his address. Your august presence, sir, has given a glorious Shubharambh to CMAS. We are indeed thankful
to Admiral Karambir Singh for accepting our invitation and adding his eminence to this occasion. Dr. Shekhar Mande, your presence has added immense value to this program, and we are very fortunate to have you with us. Vice Chancellor Professor Suhas Pednekar, sir, I wish to thank you for your vision, encouragement, and constant support. Pro Vice Chancellor, Sir Professor Ravindra Kulkarni, sir, your support has been invaluable in this initiative. I take this opportunity to acknowledge the contributions and inputs of some of the individuals who have helped us curate the developmental plan of CMAS. Dean Professor Rajesh Kharath, Rear Admiral S.J. Singh, Commodore Shrikant Kesnur, Director NIO Professor Sunil Kumar Singh, Dr. Prasanna Kumar, Dr. Satish Shenoy. Thank you for your contributions and inputs in the planning for CMAS. We acknowledge and thank the eminent presence of the members of the advisory board of CMAS. We are privileged to have subject matter experts and stalwarts in our panel of advisors. Thank you for joining in today, and many of them would watch online the event to navigate CMAS to achieve excellence. The eclectic team are from Indian Navy, Mercantile Shipping and Commerce, Maritime Strategy, Maritime Law, History, Maritime and Marine Science and Technology, Blue Economy, etc. Thanks goes to the university authorities, the in-charge registrar officers of the university, esteemed members of the Senate, Management Council, Academic Council, deans, associate deans, HODs, directors, principals, and faculty who joined us today and for their good wishes. Thanks goes to all our esteemed invitees from Indian Navy, vice chancellors who are part of our advisory board, and industry stalwarts and leaders. As we cast off CMAS today, we hope that the center will navigate and sail to long-term sustenance with excellence in higher education and research in maritime studies. Thank you very much. Dhanyavad sabko. Just give us 2 minutes time. Our IT team would load the national anthem and we will all rise and stand up. And it has been sung by our students in the heritage structure of the convocation hall, which you can see behind our Honorable Vice Chancellor. Just give us 2 minutes for the IT team to just put it on the screen, and then we can rise for the national anthem. Thank you very much. Dhanyavad. Requesting all to please rise. Officially declared this event complete and closed. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you so much for joining. Thank you.